record. Okay, so ladies and gentlemen, the course which we are taking, we know that the name is Enterprise Networking, Security and Automation. Security and Automation. Security and Automation. This is the name of the course. Rightly, there are the three parts. On one, we will be talking about the enterprise networking. The second part, we'll be talking about the security. And in the last part, inshallah, we'll be talking about the automation in networks, right? Okay. So we started last week with the topic number 1, and I explained to you that in the topic number 1, the major topic is the only one, and that is routing, because routing is core of the networks, core of enterprise networks, large networks. Even as I explained last time, that in small networks, as we did in switching, routing and wireless essentials, we came up that whenever we have a router R1 and it has multiple interfaces, whenever we give an IP address to the interface and make it enable, in the routing table of this router R1, an entry about this network N1 is automatically created. Similarly, in the second and the third, if there are 3 interfaces, but do understand कि इसका मेरा हरगिज मतलब नहीं है कि राउटर की बस 3 interfaces होंगे. You know that there may be the fast Ethernet interfaces, there may be the gigabit interfaces, and there can be the wide area WIC card. Through WIC card we can have the wide area connectivity as well. So there are multiple interfaces, multiple type of interfaces, but whenever we assign an IP address to it, automatically in the routing table an entry is created. In the routing table an entry is created. Okay, nice. Number 2, that was number 1. And in the number 2, if you remember, we talked about that whenever the administrator wants to add some entries, into the network, into the routing table statically, so he can enter the routes into the routing table statically, right? Okay, but in the large networks, as I said last week as well, that it is both of them. Definitely number 1 जो है वो तो automatically create हो जाएगा, उसका तो कोई में मसला नहीं. The problem is that in the large networks, statically entering the values in the routing table statically is a very tough task, is a near to impossible task. That is the reason we must have some way to add dynamically routing. We should populate the routing table dynamic, and for this we need the routing protocols. Okay, now the routing protocols can be interior gateway routing protocols, routing RP, interior routing protocols, and exterior routing protocols. In the interior routing protocols, which are within the domain of the operator, So such dynamic routing protocols are known as interior routing protocols, interior gateway routing protocols. Now, interior routing protocols examples can be 2 types. One is the distance vector routing protocols, and the other one is the distance vector. Another one is the link state. In the distance vector routing protocol,
I explained, but first I should write that in the exterior gateway, which is between inter-domain, that is the inter-domain routing protocols, may I call it. The inter-domain routing protocol example is BJP. BJP. While the examples of the intra-domain, I may call it number one as the intra-domain routing protocols. Intra-domain routing protocols. Intra-domain and inter-domain. I hope you understand the difference between the two. जब आपकी यूनिवर्सिटी में कोई लेट इट बी गेम्स होती हैं तो क्या होता है, यू मे प्ले the games can be among the departments. So electrical may play with the civil, electrical may play with the computer system. So that is inter-domain, interdepartmental. And if your chairman organize something within the department, so it means maybe the semester one may play or may have a competition with semester two or vice versa. बाज केसेस में कलर्स होते हैं, blue color is playing with the yellow color, for example. So that will be called as the intra sports festival, maybe. So again here, ladies and gentlemen, we talked about that the distance, the intra-domain, which is the basic emphasis of this course, is maybe, as I said earlier, it may be distance vector. And in the distance vector routing protocol, I told you last time that it uses the Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm. For what purpose? I explained. And the examples of this distance vector routing protocol is RIP version 1, version 2, and now RIP version 2. And further, it may be the interior gateway protocol, IGR. Okay. While this course is more on emphasis on the link state routing protocols. Link state routing protocols. And the good example is OSPF and ISIS, intermediate system to intermediate system. But this course is mostly emphasizing the OSPF. And do remember that link state routing protocol uses Dijkstra's algorithm to find the best path. Dijkstra algorithm, right? So ladies and gentlemen, अगर हम further बात करें तो what mean by the link state? What mean by the link state? So it means, I explained last time as well, by link means the interface of a router, simply. All of these are the links. And what mean by the state of the link? By state of the link may mean the prefix of this network, maybe the prefix length of this network, prefix length, and maybe the cost. So these may be considered as the state of the link. So that's the reason, because this protocol is talking about the link state. That's the reason it is known as such routing protocols are called link state routing protocols. Okay. Then is the one thing more, that in the link state routing protocol, what happens, that you flood the network with routing information regarding your जी बच्चे Thank you, Alina. So the recording has started.
सो हम पहली रिकॉर्डिंग में हमने जहां तक देखा उसके बाद सिर्फ मैंने ये बात की कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेट्स शेयर करते हैं राउटर्स एक दूसरे के साथ, जिसमें नंबर 1 टाइप ऑफ है हेलो पैकेट्स, नंबर 2 डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स, नंबर 3 लिंक स्टेट पैकेट्स और रिक्वेस्ट पैकेट्स, एंड फाइनली इज द लिंक अपडेट पैकेट्स। ठीक है, अब इनसे क्या क्या इन पैकेट के जरिए क्या होता है कि अगर जब आप नेबर टेबल एक दूसरे को हेलो टेबल भेज रहे हैं, हेलो मैसेजेस भेज रहे होते हैं, हेलो पैकेट्स भेज रहे होते हैं, तो उससे आपको अपने नेबर्स के बारे में पता चल जाता है कि मेरे नेबर कौन है। और लागी तौर पे यही मैंने अभी कहा कि लिंक स्टेट में आप अपनी नेबर की इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाते हैं। जब सब तक पहुंचाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, फ्लड करते हैं, तो उससे आपके पास क्या चीज बन जाती है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक। और लाजमी तौर पे जब आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अब आपने अपनी नेबर की इंफॉर्मेशन सब तक दे रहे हैं, तो दैट विल बी सेंट बाय यूजिंग दी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स। जब ये आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट आपके किसी के पास भी पहुंचा और उसको फील हो रहा है कि उसके पास कुछ चीज कम है, तो ही विल सेंड यू ए लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट, और उसकी जवाब में आप उसको क्या भेजेंगे, अपडेट पैकेट भेजेंगे, जिससे उसका लिंक स्टेट डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। लिंक स्टेट डेटाबेस क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मैं इस टोपोलॉजी टेबल को सिंपली ये कहना चाहूंगा कि इट सीम्स टू मी लाइक ए मैप। तो आपको पता है कि आप जब भी मूव कर रहे होते हैं कार में, फॉर एग्जांपल किसी डेस्टिनेशन पे आपने जाना होता है, किसी शहर आपने जाना होता है, आप उसको फीड कर देते हैं कि जी मेरा सोर्स ये है और मेरी डेस्टिनेशन जो है फलाने शहर में फलानी जगह है, फलाना रोड है, फलाना व्हाटएवर। तो क्या करता है, आपके इस मैप के ऊपर कोई एल्गोरिथम रन करता है जो कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि राउट बता देता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। Exactly the same, ladies and gentlemen, you have the network topology map now, and you have the digital algorithm. So this algorithm works on the topology table, and it provides you a shortest path, a best path from source to any destination in the topology. Do you क्या मेरी बात समझ आ रही है? And based upon this, what happens? We get a forwarding table. We get a forwarding table, or you may call as the forwarding database, which you may call as the routing table. Now this routing table is available now, you can use it, and any router can send packets to any other destination in the network. कुछ बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? शाबाश। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, मैंने सारी बातें तकरीबन पुरानी ही की हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम। अगर सब क्लियर है तो माशाल्लाह, और फिर मैं आगे चला जाता हूं। और आगे जाने के लिए आगे जाने के लिए इसके नोट्स या कुछ मैं आप लोगों को शेयर कर देता होता हूं, तो रिकॉर्डिंग के साथ आपको ये भी मिल जाता है। तो आई होप के इट विल बी इवन मोर नाइस, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक, खुद भी लिखते हैं तो अच्छी बात है, खुद भी लिखते हैं तो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी आपके साथ कोशिश करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर फर्दर आगे चलना चाहता हूं, दैट इज अबाउट दी कि जो भी दो राउटर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसको कहते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, LSE, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, याद रखें कि ये लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट इसकी टाइप्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक स्टेट टाइप्स। ठीक है, लिंक स्टेट के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड दी, दे आर मोस्टली कॉल्ड एज दी टाइप 1, LSA टाइप 1, type 2, type 3 and up to type 8, maybe little more ho, lekin mostly you will find the type 1 to 8. The first type is normally called as the router advertisements, router LSAs advertisement.
टाइप 2 बताता हूं, इनको एक्सप्लेन करता हूं, इज द नेटवर्क एलएससी, is the network LSC. The third one is the type 3, which is called the summary, although नाम ये कोई ठीक नहीं है लेकिन लिटरेचर में है तो we have to follow summary LSC. Then we have the type 4, which is called as the summary ASDR LSC. ठीक है. Number 5 is the autonomous system, autonomous autonomous system external LSA. ठीक है. Then is the 6th number, which is called the multicast OSPF, multicast OSPF LSA. तो बताऊंगा कि ये सिस्को नहीं यूज करता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. 7th is the not so stubby area, STUBBY, stubby area LSA. And finally is the 8th number, which is the external attribute LSA for BGP. So ladies and gentlemen, these are the prominent, may I say, types of, अभी तो हमने शुरू किया है तो कैसे 10 मिनट रह गए. anyhow, ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलएसए है. ठीक है. एक चीज और बताता चलूं, फिर इन एलएसए की टाइप्स को एक्सप्लेन करता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो ओएसपीएफ है, जो कि आपको पता है एग्जांपल है किसकी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं. इस राउटिंग प्रोटोकॉल में हम राउटर्स को क्यों पहले ये बता दूं क्यों ये करते हैं. क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर हमारे पास चंद राउटर्स हों लाइक हियर, तो एवरी राउटर विल फ्लड द नेटवर्क. यानी इसकी इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, इधर एंड सो ऑन. And a lot of traffic will be here. A lot of the control traffic, may I call, lot of, there is some question in the chat. Sir, kindly generally, what is function of LSA? Very right, Ji Bashir. What is the function of LSA? As the name represents, that there are two routers which want to share some information with one another. And what type of information? Routing information. When the routers want to share, this is router R1 and this is router R2, they want to share some routing information with one another. So we know that routing information will be about some links, about some link states. That's the reason this advertisement which one router sent to another, that advertisement is called link state advertisement. Does it make sense now? Yes. Nice. So if you understand the link state advertisement, so I said that there are 8 types of link state advertisement. Number 1 is the router LSA. Number 2 is the network LSA. Number 3 the summary LSA. Number 4 is the ASBR LSA, summary ASBR LSA. Number 5 is the autonomous system external LSA. Number 6 is the multicast OSPF LSA. Number 7 is the not so stubby area LSA. Number 8 is the external attribute LSA for BGP. Ji, is there any other question? Shabash. इसमें हमने 8 लिखे हैं, ये 1 to 11 तक नहीं थे? और भी हैं, लेकिन इस कोर्स में 5 तक हैं.
इस कोर्स में जो हम सीसीएनए का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें 5 टाइप की एक्सप्लेन की गई हुई है, लेकिन मैंने कई जगहों पे 8 भी लिखी हुई है, कहीं पे 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। सो बाकी जो है दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसमें भी एक जो है ये मल्टीकास्ट ओएसपीएफ एलएसए, ये नहीं काम का, तो हम 5 के बाद 7 पे चले जाएंगे। डू यू गॉट द आंसर एसएल? जी सर, जी सर। ओके, तो लेट मी कंटिन्यू देन। तो मैं कह ये रहा था कि यहाँ पे मैं ये कहूंगा, आपको पता है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग, may I call it abnormal traffic will be, abnormal control traffic will be on the network. So to there may be an idea that we should divide our whole network into, even if it is a small network, you may go with a single area. area का मतलब क्या है? a group of routers, maybe 2, maybe 4, मैं नहीं कह रहा कि even number, इसका मतलब any number, 2, 3, 4, 5, 6, any. So you combine some number of routers and you call it an area. So अगर आपका नेटवर्क छोटा है तो you may go with a single area, but if your network is a large network like PTCL for example, definitely a single area will create a huge problem. Maybe in the PTCL network there may be 500 routers, and 500 routers flood, you understand, will make the whole network problematic. That's the reason we divide it into multiple areas. Like for example, we have one area, I have a router here, R1, sorry, R2, then I have another area here. I have multiple routers, but I call it R3. R3 is connected to R4, and there is another, I call it another area. So mostly, which is the central area, we call it the backbone area. अगर एक ही है तो फिर तो बस एक ही है, और अगर नहीं है तो then this one in the center, we also call it area 0. Which means the backbone area, and others may be called as area 1, area 2, area 3, and so on, maybe area 50. Do you got the method, what is mean by the multiple areas and what mean by the single area? If I have, maybe I have only 5 routers and I form a single area. So this all of these routers probably are configured on OSPF. That is an example of a single area. Here you can see I have 3 areas. I can have 100 areas, no problem. कुछ बात समझ आ रही है? सर ये जो रीजन्स में सर जो डिवाइड किया होता है सर, ये वो चीज है जो बिल्कुल जी, आप उसको रीजन कह लें, लेकिन ओएसपीएफ की जुबान में हम उसको एरियाज कहते हैं। मिसाल के तौर पे दिस एरिया, लाजमी तौर पे आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर द केपी एंड कंपेयरिंग इट विद पंजाब माइट हैव मल्टीपल एरियाज। यू गॉट द आंसर? जी सर। नाइस, वेरी नाइस। सो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एरियाज की बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि अगर इट इज अ मल्टीपल एरिया देन वी मे कॉल इट इज द बैकबोन एरिया। नंबर 1 इज द बैकबोन एरिया। क्या मतलब है बैकबोन एरिया? लेडीज एंड जेंटलमैन, बैकबोन एरिया का मतलब यह है, इट इज लाइक ए स्विच। Whenever you have a switch and the devices are connected to it or the routers are connected to it, for example, now what it forms? This switch is acting like a backbone for them. Similarly, the backbone routing area or area 0, all the traffic from one area to another area goes through the backbone. That's the reason it is called area 0 or a backbone area. You got the answer? Yes. Nice. So ladies and gentlemen, probably within 2 minutes, I don't think हमने 40 मिनट बात की है, लेकिन ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा
but after तो आप approximately 2 डिस्कनेक्ट हो गए minutes थे। हमारा connection drop होगा, but I will send you the link again as quickly as possible so that with minimum interruption we should continue. ठीक है? तो one is the backbone area, the second one is the standard area. अभी हम इन दो पे ही बात करना चाहेंगे, लेकिन आगे जाके हम स्टब एरिया की बात भी करने चाहेंगे। हम नंबर 4 विच इज द टोटली स्टब एरिया, इस पे हम बाद में बात करेंगे, टोटली स्टब एरिया। एंड नंबर 5 इज द नॉट सो स्टबी एरिया। तो इन तीन आखिरी तीन पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बैकबोन एरिया या एरिया 0 क्या होता है, कि सारी की सारी आपकी ट्रैफिक जो है दैट पासिस थ्रू from, if it has to pass to from one area, like it be from area 1 to area 50 in this example, it has to go through the backbone. And that is the reason this router in this example, router R3, may I change the color? I don't should change because less than a minute, so I think I should stop.